Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our lecture on the chapter number 3. Topic 4, the trends of the shielding effect, the trend of the ionization energy, and the trends of the electron affinity. तो बेसिकली हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है क्या? शील्डिंग इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं between the nucleus and the outermost shell of an atom, एक outermost shell of an atom और बीच में न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियर चार्ज felt by the electrons present in the outermost shell. The attraction of the outermost shell towards the nucleus partially reduced because of the presence of the inner electrons. Let me just elaborate this on the whiteboard. Okay, so basically this is a nucleus and this is the outermost shell and ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस न्यूक्लियस को इन इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में किसी भी किस्म की रुकावट महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीच में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर एक न्यूक्लियस है दैट हैव के एल एम and n shell that contains electrons as well. ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में इशू नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि ये एज अ शील्ड एज अ रिकवर्ड मौजूद है। फिर इसी इलेक्ट्रॉन को फर्दर लास्ट वाले तक पहुंचने के लिए इस शील्ड को और इस शील्ड को क्रॉस करके इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने में अगर बीच में और शेल्स मौजूद हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाते हैं। वो एज अ शील्ड एक्ट कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना जाए। तो शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर ज्यादा होगा या इसके अंदर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इस बड़े वाले के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर शेल ज्यादा मौजूद हैं। जितने ज्यादा शेल उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, जितने कम शेल उतना कम शील्डिंग इफेक्ट। सो दिस लाइन, द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर, just a second, let me change the brush. Yes. The attraction of the outermost electron towards the nucleus is partially reduced because of the presence of the inner electron. Inner electron या शेल की प्रेजेंस की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाता है। एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करता है लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो एक्चुअल चार्ज होता है जो हमारे सबसे करीब वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का आता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखें इसमें ढेर सारे शेल मौजूद हैं। इस आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और ये आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होता है इसके चार्ज की वो बात करें। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर मौजूद होंगे, शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। इसको शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के अंदर मौजूद होते हैं वो एज अ शील्ड एक्ट करते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक जानी चाहिए उसको जो है वो डिक्रीज करते हैं, उससे रिड्यूस करते हैं और उसके अगेंस्ट एज अ शील्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि अब ये जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंचे। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें, एटम ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं एंड दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप क्योंकि अगर हमें लास्ट लेक्चर याद है तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम शेल्स अमाउंट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, शेल्स अमाउंट में बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज जब शेल अमाउंट में बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो शील्डिंग इफेक्ट है
और जो ग्रुप में शीलिंग इफेक्ट है अब हमने वो देखना है। ग्रुप का हमने पढ़ लिया है, टॉप टू डाउन जाते हुए शीलिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। Because of this, it is very easy to take away electron from the potassium than from the sodium. सोडियम हमारे पास Na टॉप पे है और पोटाशियम सोडियम से नीचे है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेके जाने में मसला होगा, लेकिन पोटाशियम का क्योंकि शीलिंग इफेक्ट कम है, न्यूक्लियर का फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू सोडियम, इसकी वजह से पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन लेके जाने में आसानी होगी एज कम्पेयर टू सोडियम। Similarly, shielding effect decrease in a period if we move from left to right. अब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होते, तो और जब शेल इंक्रीज नहीं होंगे तो जाहिर है शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। Now I'm generating a poll. Answer this poll in next 30 seconds. I'm ending the poll now. Okay. So here is the diagram of the sodium and the potassium. Sodium मैंने बताया ऊपर, potassium नीचे, सोडियम से नीचे होता है, सॉरी। जो शील्डिंग इफेक्ट है ये ज्यादा होती है पोटाशियम यानी के अंदर देन द सोडियम। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंट करें 1 2 3 एंड 4 शेल, 1 2 3 शेल, सोडियम के अंदर सिर्फ 3 शेल हैं, पोटाशियम के अंदर 4 शेल हैं। इसके अंदर शेल ज्यादा है, इसके अंदर शेल कम है, इसलिए इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, सोडियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल कम तो शील्डिंग इफेक्ट कम, नंबर ऑफ शेल ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने में आसानी होगी क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज ऑन आउटर मोस्ट शेल कम होगा एज कंपेयर टू इसके न्यूक्लियस का चार्ज ऑन आउटर मोस्ट शेल। इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाने के लिए एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि इधर शील्डिंग इफेक्ट कम है और इधर न्यूक्लियस का जो चार्ज है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इधर न्यूक्लियस का चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को लेके जाना जो है वो ज्यादा आसान होगा। Before moving towards the next trend, let's watch a video on this. You may have learned that an alkali metal reacts with water to form hydrogen gas and the corresponding metal hydroxide. You may have also learned that the reactivity of these metals with water increases moving down the group. That lesson is actually available right here on this channel. In this lesson, we will learn about the concept of shielding and how it contributes to certain observed trends, such as the reactivity of alkali metals with water. Moving down group 1 of the periodic table, atomic radius increases by 1 electron shell. Lithium has 2 electron shells, sodium has 3 electron shells, potassium has 4 electron shells. We know that these alkali metals can lose their lone electron in their valence or outermost shell to form an ion with a positive 1 charge. In fact, this is what happens when an alkali metal reacts with water. The ease of formation of the ion is
directly proportional to the ease of losing that electron. Moving down the group, the outer shell electron becomes further from the nucleus. This decreases its attraction. Shielding is defined as the decreased electrostatic attraction between the nucleus and the outermost electrons due to the presence of additional electron shells. Shielding increases. This again decreases the attraction for the outer shell electron. Although nuclear charge increases, the atomic radius and shielding, as mentioned, outweigh this increase. So moving down the group, it is easier to lose the outer shell electron. We can think of the nucleus like a magnet. A magnet is able to hold onto an iron nail. Wrap the magnet with a sheet of cloth, and it would not hold onto that nail as effectively. Wrap it with another sheet of cloth, and it would be even harder for it to hold on to that nail. The same idea applies to the alkali metals. If there are more electron shells present between the nucleus and the valence electron, the attractive force of the nucleus to that electron will be weaker. So the greater the shielding, the easier it is to lose an electron to form an ion. The term ionization energy is used to describe the amount of energy required to remove an outermost electron from an atom. Increased shielding means that ionization energy is decreased. The same trend is observed moving down any group in the periodic table. Let's take the halogens as an example. Reactivity decreases moving down the halogens. Halogens each have 7 valence electrons and therefore accept an electron to form a complete octet and a negatively charged ion. So the nucleus of a given halogen would need to attract that electron. The energy released when an electron is added to a neutral species to form a negative ion is known as the electron affinity. This determines the affinity of a species for attracting electrons. Okay, so that was a shielding effect. Now we are moving towards our next topic, which is the ionization and the trends of ionization in the groups and the periods. Ionization. So ionization energy is the amount of the energy. This is the definition. अमाउंट ऑफ द एनर्जी एनर्जी की वो अमाउंट जो रिक्वायर होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ये है हमारे पास न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल जिसके अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, इसके अंदर भी इसके अंदर भी है. अब इसका इसके ऊपर चार्ज है, इसका उसके ऊपर भी, इसका इसके ऊपर भी. अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे रिक्वायर होगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एटम. इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. इसको आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं. नाउ this was the definition of the ionization energy, the amount of energy needed to remove the successive electrons present in atom increase. Now ये इलेक्ट्रॉन था मेरा, वेट, ये इलेक्ट्रॉन था मेरा, ठीक है. इसको रिमूव करने के लिए मुझे 2 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये फर्ज करें हम. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली अब इसके ऊपर जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो होगा ज्यादा. अब इसके बाद जब मुझे सक्सेसिव यानी इससे नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए हो सकता है मुझे 4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, क्योंकि ये पहला था, ये आराम से निकल गया. अब ये दूसरा था, इसका जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज था, अब वो भी कुछ इसके पास, कुछ उसके पास, कुछ इसके पास चला गया, यानी अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी तरफ और बढ़ गई है. जब ये रिमूव हो जाएगा, इसके बाद
इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे 6 किलो जूल की देनी पड़ेगी। इसके लिए जब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो अब मुझे इसके लिए 8 किलो जूल की, और इनर वाले के लिए फिर 20 किलो जूल की, क्योंकि वो सबसे इनर वाले शेल के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसी किसी भी एटम की जो पहली आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो कम होती है, फिर सेकेंड आयनाइजेशन उससे ज्यादा होती है, थर्ड उससे ज्यादा होती है, फोर्थ उससे भी ज्यादा होती है। इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, अगर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, एनर्जी जो रिक्वायर है हमें टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देंगे। अगर फॉर एग्जांपल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम एटम इज 496, सोडियम है, सोडियम को सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 496 किलो जूल पर मोल, और प्लस है यानी एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वैलेंस शेल में, तो दे रिमूव वन बाय प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी, तो फिर उनको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सच एज ग्रुप 2 और 3 एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल, therefore they will have more than one ionization energy values। ग्रुप 2 और ग्रुप 3, अब जो ग्रुप 1 है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जो ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में दो होंगे, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको तो हम फर्स्ट आयनाइजेशन से निकालेंगे, लेकिन जब इसको करेंगे तो इसको फर्स्ट आयनाइजेशन, और फिर इसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी जो कि मोर होगी देन फर्स्ट आयनाइजेशन। इसी तरह से इसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इसके लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इसके लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। ये कम होगी, ये फर्स्ट से ज्यादा होगी, और ये सेकंड से भी ज्यादा होगी। थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से बहुत ज्यादा होगी। नाउ ट्रेंड्स, अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इस तरह से, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, व्हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट शेल इंक्रीज नहीं करता, पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ये हमारे न्यूक्लियस हैं जो कि मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पहला ही शेल, सेम शेल, सेम शेल, सेम शेल एंड सेम शेल, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, पांच इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एनर्जी, इसके ऊपर है, इसकी एनर्जी अब बढ़ गई है क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी एनर्जी और बढ़ गई है, अब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है। इसकी एनर्जी ऑन फोर इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर तो शेल बढ़ते होते तो एनर्जी भी डिक्रीज होती, पर क्योंकि शेल नहीं बढ़े, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो जो एनर्जी है, अब इसको निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी 2 किलो जूल। ये भी सिर्फ फर्ज करें हम पर मोल, लेकिन अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो पहले को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी 3 किलो जूल जो कि बढ़ती जा रही है, और दूसरे के लिए 6। इसी तरह से इसके पहले निकालने के लिए, पहले को सिर्फ 2, फिर 3, अब 4, वो भी अमाउंट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस का चार्ज देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है, तो क्योंकि जब न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते जा रहे हैं, तो जो उसका चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जब हम ट्रेंड देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करते हैं, क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं हो रहे, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़ती जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर अभी हम सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी पहली, इसकी पहली, इसकी और इसकी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी इससे ज्यादा है, आगे इसकी इससे ज्यादा होगी, इस वाले की लास्ट वाले से ज्यादा होगी, और इसकी जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन मौजूद हैं आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट में, इसकी इससे सबसे ज्यादा होगी। ये क्यों होता है? बिकॉज साइज ऑफ एटम रिड्यूस होता जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज,
साइज हमारा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा था, बट नाउ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट ऑब्वियसली डिक्रीज। ये भी हम सिर्फ पीरियड की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज? कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी न्यूक्लियर एनसी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो आयनाइजेशन है यानी किसी भी चीज का एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो ये वाला टेबल याद करना होता है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, sorry, shielding effect decrease, atomic number increase, and atomic size decrease. Now, the elements on the left side of the periodic table have low ionization energy. जो left side पे होगा उसकी सबसे कम ionization energy होगी as compared to the right side of the periodic table as shown in the period number 2. Now this is period number 2. Period number 1 में सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम है, पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन मौजूद हैं। जो लिथियम है जो सबसे लेफ्ट वाले साइड पे उसकी सिर्फ 520 किलो जॉल पर एनर्जी है। आगे ब्रिलियम की 899 है जो 520 से ज्यादा है। बोरॉन की 801 है जो 899 से कम है। फिर 1086 है, देन 1402 है, देन 1314 है, 1681 है और 2081 है। अगर देखें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी करेक्शन करें, इधर 901 है, इधर 801 नहीं है। ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। लिथियम मोस्ट लेफ्ट साइड पर है तो इसकी सबसे ज्यादा कम है इन दिस पीरियड, और नियॉन जो कि स्टेबल गैस है और नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, उसकी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन इंक्रीज करती है इन पीरियड। नाउ द ट्रेंड इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड है? जब हम मूव करते हैं डाउन, मोर एंड मोर शेल lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional cells reduce the electrostatic force felt by the electron present in the outermost shell. Resultantly, the valence shell electrons can be taken away easily. Therefore, ionization energy of element decrease from top to bottom. Whiteboard, trend in group. ग्रुप के अंदर एटॉमिक नंबर यस इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि शेल्स इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन शेल, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज कर जाएगा। जब वो डिक्रीज कर देगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये वो सारा टेबल है जो हमने अपने एक पेपर पे बना लेना है टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी ट्रेंड। नाउ फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ये पहला ग्रुप हमने लिखा है जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर 3 इंक्रीज करा है, 11 इंक्रीज करा है, 19 इंक्रीज करा है, 37 इंक्रीज करा है, 55 इंक्रीज करा है। आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या था? डिक्रीज करेगी 520,
496 कम है, 419 496 से कम है, 403 496 19 से कम है, और 377 सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल टॉप टू बॉटम इजी हो जाएगा। सीजियम सबसे एंड पे है, लिथियम सबसे ऊपर है। सीजियम का इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है, इसके अंदर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 है, सीजियम की सिर्फ 377 है। तो 377 एनर्जी देके इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है एज कम्पेयर टू 520 की एनर्जी देके लिथियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या उसको आयन में कन्वर्ट करना। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ग्रुप के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन द ग्रुप। नाउ आई एम जनरेटिंग अ पोल। Attempt this poll in next 30 seconds. I'm ending the poll now. Okay, so this was a trend of ionization. Let's watch a video first before moving towards the third trend, which is electron affinity. So let's talk a little bit about a word you might have heard, and that is ion. Let's talk about what it is, and then we'll talk about trends in the periodic table on I guess, how hard it is to make something an ion, in particular, how hard it is to make something a positive ion. So an ion is just an atom or a molecule that has charge. And it'll have charge if the protons are not equal to the electrons. Neutrons are obviously also a constituent of atoms, but neutrons are neutral. What you're going to get your charge from are your protons or electrons. So you're going to have a net charge if your number of protons, and this is for an atom or a molecule. A molecule is just a bunch of atoms bonded together. If the number of protons does not equal the number of electrons. And you can have positive ions if the protons are more than the number of electrons. Protons are positive, electrons are negative. And you can have negative ions if the number of electrons are greater than the number of protons. For example, if you just had hydrogen in its neutral state has one proton and one electron. But if you were to take one of those electrons away, then hydrogen would have a positive charge, and essentially would just be, in its most common isotope, it would just be a proton by itself. And so when we talk about a positive ion like this, where our protons are more than our electrons, the number of protons are more than the number of electrons, we call these cations. Cations. Cation, once again, just another word for positive ion. Likewise, we can have negative ions. So say, for example, fluorine.
So fluorine gains an electron. It's going to have a net negative charge. It's going to have a charge of -1. And a negative ion we call an anion. And the way that I remember this is, A kind of means the opposite or the negation of something. So this is a negative ion. We're negating, you could somehow think we are negating the ion. So with that out of the way, let's think about how hard it will be to ionize different elements in the periodic table, in particular how hard it is to turn them into cations. And to think about that, we'll introduce an idea called ionization energy. Ionization energy. And this is defined as the energy required to remove an electron. So it could have even been called cationization energy, because it's the energy required to remove an electron and make the overall atom more positive. So let's think about the trends, and we already have a little bit of background on the different groups of the periodic table. So for example, if we were to focus on, especially, we could look at group 1, and we've already talked about hydrogen's a bit of a special case in group 1, but if we look at everything below hydrogen, if we look at the alkali metals here, we've already talked about the fact that these are very willing to lose an electron. Why? Because if they lose an electron, they get to the electron configuration of the noble gas before it. So if lithium loses an electron, then it has an outer shell electron configuration of helium. It has 2 outer electrons. And that's kind of, we typically talk about the octet rule, but if we're talking about characters like lithium or helium, they're happy with 2 because you can only put 2 electrons in that first shell. But all the rest of them, sodium, potassium, etc., if you take an electron away from them, then their outermost shell, all of them, their outermost shell, they're going to have the electron configuration of the noble gas before it. And for sodium on down, that outer shell is going to have that perfect 8. Lithium, if you remove an electron, it would get to helium. It will have 2 electrons in its outer shell. So you can imagine that the ionization energy right over here, the energy to require the energy required to remove electrons from your alkali metals is very low. So let me just write down. So when I say low, I'm talking about low ionization energy. Low. Now what happens as we move to the right of the periodic table? In fact, let's go all the way to the right on the periodic table. Well, if we go here to the noble gases we've already talked about. They're very, very, very stable. They don't want their electron configurations messed with. So it would be very hard. I mean, neon on down has their 8 electrons, that kind of octet rule. Helium has 2, which is full for the first shell. And so it's very hard to remove an electron from here. And so it has a very high ionization energy. Low energy, easy to remove electrons, or especially the first electron. And then here you have a high ionization energy. You have trouble seeing that H. So this is high ionization energy. And that's the general trend across the periodic table. As you go from left to right, you go from low ionization energy to high ionization energy. Now what about trends up and down the periodic table? Well, within any group, if we look at the alkali metals right over here, if we're down at the bottom, if we're looking at say cesium right over here, that electron in the 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the 6th shell, that's going to be further from that 1 electron that lithium has in its 2nd shell. So it's going to be further away. It's not going to be as closely bound to the nucleus, I guess you could say. So this is going to be even that 1 electron is going to be even easier to remove than the 1 electron in the outermost shell of lithium. So this one has even lower. And that's even going to be true of the noble gases out here.
that xenon, that its electrons in its outermost shell, even though it has 8 valence electrons, they're further away from the nucleus. And so they're a little, the energy required to remove them is still going to be high, but it's going to be lower than the energy from say, neon or helium. So this is low. So once again, ionization energy, low to high as we go from left to right, and low to high as we go from bottom to top. Or we could say a general trend that if we go from the bottom left to the top right, we go from low ionization energy, very easy to remove an electron from these characters right over here, to high ionization energy. Very hard to remove an electron from these characters over here. And you could see it if you could see this in a trend of actual measured ionization energies. And I like to see charts like this because it kind of shows you where the periodic table came from. When people notice these kind of periodic trends, it's like, hey, it looks like there's some common patterns here. But on this one in particular, we see on this axis, we have ionization energy in electron volts. That's actually, it's literally this is units of energy. You can convert it to joules if you like. And over here, we're increasing the atomic number. So we're starting with hydrogen, then we go to helium, and then we go from hydrogen to helium to lithium. And let me show you what's happening right over here. So you go to hydrogen to helium. So helium here is very stable, so it's very hard to remove an electron. And then you go to lithium. Lithium, as we said, this is an alkali metal. You remove an electron, it gets to a stable state, so it takes very low energy to remove that electron. And then as we go from left to right in the periodic table, as we go from alkali metal to noble gases, we see that the ionization energy increases. And there are these little dips here, which you could think about why these or theorize why these dips are occurring. But you see this general trend as we go from alkali metals to noble gases, alkali metals to noble gases, alkali metals to noble gases. Now, one thing you might be saying is, hey, look, you had from here to here, that's the same distance as here to here, but now we have a larger distance here. What's going on here? Well, we have to remember, now we have all of our D block elements. So now, once we get over here, we're now adding all of the D block elements, like you say, in the fourth period. And so we have those. Okay, we are not discussing the fourth period now. ये सिर्फ revision lecture था for the um, ionization energy. Let's just revise these two concepts and we will clear the concept of electron affinity in our next lecture. So, out of all three topics, we just covered the two topics today: the shielding effect and ionization energy. तो शीलिंग इफेक्ट जो है वो हम ऐसे कहते हैं बेसिकली कि जब नंबर ऑफ शेल्स हमारे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर बढ़ते जाते हैं तो जो शेल्स होते हैं वो एज अ शील्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं। किस चीज़ के अगेंस्ट शील्ड बिहेव करते हैं कि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंचे। इस चीज़ के लिए शील्ड जो है वो एज अ शेल जो है वो एज अ शील्ड्स बनते जाते हैं। तो जब हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होते। लेकिन जब हम ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सॉरी जो आउटर मोस्ट शेल है वो इंक्रीज करता जाता है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज करता जाता है और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। और ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट जो न्यूक्लियर का चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम होता जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द शील्डिंग इफेक्ट। अब हमने इसको पीरियड और ग्रुप के अंदर दोनों के अंदर क्लियर कर लिया है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी थी क्योंकि हमने कहा कि टॉप से बॉटम में जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब शील्ड ही इंक्रीज करती जा रही है और न्यूक्लियर का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जा रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेके जाना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऐसा जिसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम है, शेल कम है और न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के केसेस में उसको लेके जाना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है इसको हम कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारी डिक्रीज करती है और इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज करती है।
So if you have any question related to these two trends, you can ask me next 1 minute. If not, you can ask me in the first 5 minutes of our next lecture, which is on Monday. ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारा रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मेटालिक करेक्टर के ट्रेंड को भी जो है वो क्लैरिफाई करेंगे. सो टिल देन, Allah Hafiz and thank you, and attempt the tests which are related to these slides.